Assalamu alaikum everyone, this is Mahira Khan. If you like this video, please share and comment. And of course, subscribe to Rewind with Samina Pirzada. आज रिवाइंड विद समीना पीरजादा में मेरी मेहमान है माहिरा खान। बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत प्यार करती हूँ। बिल्कुल चिड़िया सी है, तितली सी है, लेकिन क्या महसूस करती हैं, क्या सोचती हैं, ये तो मालूम करना पड़ेगा ना। तो वेलकम करते हैं माहिरा खान को। वेलकम मेरी जान। थैंक यू। कहाँ कहाँ घूम के आई हो आज? हाँ, आज तो ज्यादा नहीं घूम के आई, but I have been traveling. वरना थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, बचपन की बातें करते हैं। कितने बहन भाई हो? मैं हूँ और हिसान है. So just a brother, another brother, because I'm a brother. So नहीं. घर का लाडला कौन है? तुम? नहीं. टोटली. मैं स्पॉइल्ड हूँ, लेकिन मैं उसको स्पॉइल करती हूँ. हम दोनों में एक साल बड़ा का कौन है? मैं बड़ी हूँ. And you know this कि अम्मा and अब्बा didn't have kids for 8 years. So अम्मा actually was going to adopt. And then she got pregnant after 8 years. So obviously वो एक and बाद में जब obviously ये बातें होती थी ना कि मिरेकल बेबी 8 साल तक बच्चे नहीं थे, और कभी कभी अम्मा नाराज होकर भी कह देती हैं अब मुझे पता चला कि क्यों नहीं हो रहे थे बच्चे. तो इनसिक्योर नहीं हुई कभी? क्योंकि मुझे जब कहा गया था कि तुम्हें तो अडॉप्ट किया था, या जैसे कूड़े के ढेर से उठा लिया था, या पाउडर लगा के बहुत साफ सुथरा कर लिया था, बिकॉज दे यूज्ड टू डू दैट टू मी. रियली? टीज करने के लिए पेरेंट्स करते हैं ना. सो अच्छा नहीं, यहाँ तो ऑपोजिट था ना कि वो दादा दादी एवरीवन वाज लाइक वो एक बड़ा लाड था और बहुत स्पॉइल थी, बिकॉज अगेन वही 8 साल के बाद पैदा हुई थी. दे डिडंट थिंक कि अम्मा अब्बा के होंगे बच्चे, तो वो सडनली जब दिस बेबी वाज बोर्न सो दे ऑल वर लाइक. और दादा की मैं बहुत लाडली थी अपने, बहुत ज्यादा. कैसा? व्हाट डिड योर फादर डू? क्या करते थे वो? माय फादर वाज अ बैंकर, माय मदर वाज अ टीचर. सो और हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे. ऊपर दादा दादी रहते थे. वी ऑल हैड डिफरेंट पोर्शंस. दादा दादी ऊपर रहते थे, हम लोग नीचे रहते थे, और मेरी पप्पो की भी फैमिली हमारे साथ एक और पोर्शन में ऑन द सेम सेम कंपाउंड. ओके. सो ये 3 पोर्शंस थे एक. और सारे बच्चे थे? और सारे हम बहुत सारे कजिन्स? बहुत सारे कजिन्स. बहुत मजा आता? बहुत मजा. और सारे लड़के और मैं. तो यू वर अ टॉम बॉय? नो, मैं उनको पोनीटेल्स बनाती थी और उनको नचवाती थी. एंड आई वाज रियल लाइक. खाने पीने पे रोक टोक थी? स्ट्रीट फूड पे रोक टोक है? वो नहीं खाना? अम्मा से. सो अम्मा इज पैरानॉइड. अम्मा ने ऐसी चीजें करी हैं कि हम लोग स्कूल में, मैं एक दिन आई रिमेम्बर, मैं स्कूल में खड़ी हुई थी बाहर और गोले गंडा वाला सामने खड़ा हुआ था. एंड आई हैव ऑलवेज बीन द काइंड कि अगर मुझे कोई बोल देना कि ये नहीं करना, बट एवरीवनस लाइक दैट, लाइक ये तो करना ही करना है. तो अम्मा ने कहा था गोला गंडा नहीं खाना, कुछ भी हो जाए, इसका पानी खराब होता है. अब आई एम मेकिंग माई वे फ्रॉम द स्कूल की ये वाली सड़क टू दी अदर वाली सड़क, एंड जस्ट माई लक गाड़ी पुल्स अप एंड अम्मा लाइक माहिरा. सो अम्मा, Are you scared of her? well, not really. Not really. I mean we were, but not really. तो स्ट्रिक्ट कौन था, अम्मी या अब्बू? कोई भी नहीं, दोनों स्ट्रिक्ट नहीं थे. पढ़ाई के मामले में बड़ा एक वो चलता था. एक इंसिडेंट है जो मुझे भूलता नहीं है, जो मैं बोल दूंगी तो मुझे मार डालेंगे. नहीं, कोई नहीं मारेगा, बोलो. पढ़ाई में मैं वो कह रही थी कि मुझे नहीं पढ़ना, बिकॉज आई वाज एक्चुअली गुड स्टूडेंट. ओके. एंड आई वाज लाइक आई नो दिस, आई नो माय मैथ, डोंट मेक मी स्टडी मोर. बट शी वाज लाइक नहीं. और आई रिमेम्बर जहाँ मेरी डेस्क थी ना, वहाँ पुराने ज़माने में गोल कमरा था और वहाँ खिड़कियाँ थी और खिड़की खुली हुई थी, और हिसान और मेरा दूसरा कज़न, मेरा भाई और मेरा कज़न बाहर खेल रहे थे, और यहाँ ये मुझे उसी खिड़की के सामने पढ़ा रही थी. सो रॉन्ग. खैर या सो आई एम लुकिंग कि ये लोग खेल रहे हैं और मैं पढ़ रही हूँ, एंड आई वाज लाइक एंड आई वाज लाइक मुझे नहीं पढ़ना. She said, "You wait and watch." You know what she did? You as a kid. Yeah. You know what she did? There's a yellow dress, I'll never forget, जो मेरी दादी मेरे लिए लाई थी. Yellow dress, lemon colored का, ठीक है? And she sat there with it and she said, "I'm going to burn this dress if you don't." I was like, what? अच्छा, she denies it. Of course, she denies everything I say, ना?
शी इज लाइक कभी नहीं, मैंने तो कभी तुम्हें मारा तक नहीं। मैंने कहा आपने क्या नहीं मारा, एक जगह से दूसरी जगह हैंगर। शी इज लाइक लेकिन मिस होता था इसलिए लगा नहीं। मैंने कहा मगर ट्राई तो किया है, बट ऑब्वियसली हमें मेरे ऊपर मार भी नहीं। मुझे भी काफी चीजें मेरे ऊपर अच्छा, फेंकी हाँ, गई मगर लगी बिकॉज मैं कुछ भी नहीं करती थी ना, मतलब? इसलिए बिकॉज मैं बहुत अच्छा बच्चा थी, हाँ, मुझे इसलिए भी बड़ी डांट पड़ी। That's actually the problem. But can I tell you, उन्होंने मारा वारा नहीं हमें। नहीं, कभी नहीं मारा। कभी नहीं। दूसरी चीज वो ये करती थी डराने के लिए, वो कहती थी सिट इन द कार। अच्छा अब हम दोनों गाड़ी में बैठ गए, ठीक है, सिट इन द कार, आप चला रही हैं, कहाँ जा रहे हैं? We are going to the Burns ward. I was like, what? She's like, you will see what to be grateful, what it means to be grateful. You both are I can hear her. I was like, yeah, because she Yes, is I know her voice. you know, she's Yeah, melodramatic. yes. It's like, तो she used to do that, but मारती वारती नहीं थी, बस strict भी नहीं थी, ज़्यादा strict भी नहीं थी। और अब्बा, because वो इतना काम करते थे, हम लोग ने hardly अब्बा को ज़्यादा देखा है, लेकिन अब्बा was that अब्बा जो हमें डर भी लगता था, क्योंकि he was angry, he was an angry man। लेकिन जिया, you can't imagine, मेरे सारे दोस्त हैं, एक घर होता है ना जहाँ सब जाते हैं, that was my house। all my childhood friends जो अभी भी मेरे दोस्त हैं, वो बचपन से हमारे घर आते थे। and you won't believe, हम लोग पूरी रात जागते थे, 3 बज जाते थे, 4 बज जाते थे, वो कहते थे अब्बा को उठाएं, और हम सब जाके अब्बा को उठाते थे। अब्बा विदाउट सेइंग अ वर्ड उठ के आज तक खाना बनाते। क्या क्या कौन कौन क्या क्या खाएगा, ऑमलेट अंकल, fried अंडे, पराठा, he would just that is so special. Yeah, till date he And does what that. were you dreaming about at that time? क्या ख्वाब देख रही थी? Oh, I was dreaming about being on the big screen since I was a kid. Really? और ये कैसे हुआ? क्या कौन सी फिल्म देखी, किस एक्टर से इंस्पायर हुए? भाई सच बात तो ये है कि मैंने राम लखन देखी थी। You know, it wasn't a family that watches films. You know, सब bankers, businessmen, doctors. तो मेरा ये सोचना भी जरा सा एक वो था कि how can this be possible? But everybody knew कि ये कुछ बिजनेस टेढ़ा है, क्योंकि जो मैं दरवाजे बंद कर करके टेप रिकॉर्डर डाल के नाचती थी ना, it was something। और साड़ियाँ जो मैं बांधती थी नानी की, ये साड़ी लपेटी, पूरा अपना ये लपेट के। तो बाहर पढ़ने कैसे चली गई? भाई that's another story। So मैं पढ़ने जो गई थी वो था केमिकल इंजीनियरिंग। No, really? Yeah, I enjoyed sciences. Okay. I loved chemistry and I liked math and stuff like that. फिर जब मैं कॉलेज गई तो मुझे रियलाइज हुआ ये मेरे बस की बात नहीं है, तो I changed majors and I did psychology, but I couldn't complete my college। क्यों? क्योंकि it wasn't a normal, जैसे मैंने कहा normal college life। Like for instance, मैं 2 जॉब्स भी कर रही थी और कॉलेज भी जा रही थी, फिर मैं एक सेमेस्टर ऑफ लेती थी कि मैं ठीक तरह काम कर सकूं, फिर I'll have the money and then I'll so I think I got tired somehow। Also I came back and I got married। I was, you know, And when did you fall in love? I fell in love when I was very young, 14। So it happened there, or No, it I was 14। I was before going away? yes। So could that be the reason कि वहाँ रहना मुश्किल हो रहा था? नहीं, रहना मुश्किल वो नहीं हो रहा था वहाँ। तो फिर I was there till I क्योंकि was प्यार 21। में ये ताकत है ना कि वो आपको कुछ करने नहीं देता था। हाँ ये भी है, लेकिन मैं I was there till I was 21 in LA, और वो वापस आ गए थे and then I came back। I think I just wanted कि बस you know। So फिर ये यहाँ पे कहाँ आ गए? When I came back, I by chance started VJing because, you know, Ghazan Fasab saw me, I was at MTV and he said, chalo. And I told him, I don't want to be a VJ, I want to be an actor. And he was like, that'll also happen. He said, my child, you're going to be a star, not an actor. And I was like, but I don't want to be a VJ, I want to be an actor. He was like, chalo, it was my summer vacation. He's like, kar lo। अच्छा, in that time मेरे दादा और दादी दोनों passed away in a matter of 6 months। Oh my God। जी। So I think somewhere I felt बस अब नहीं वापस जाना। I was very close to my दादा। मतलब we were like, हम दोनों एक दूसरे को letters लिखा करते थे, वो post करते थे वहाँ से यहाँ से। And it's amazing, you know, I have the most amazing letters from him।
And the last letter he wrote to me had like, जैसे होता है ना 1 2 3 4 5 के साथ rules for life type letter. Wow. Yeah. I think it's a blessing अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आए Such जो a big आपको blessing. जो आपको सिखाए, दोस्त भी हो, मेंटोर भी हो, बिकॉज यूजली होता है कि बड़े जो हैं वो सिर्फ नसीहत करते हैं, जी. लेकिन अगर बड़ों से दोस्ती हो जाए. जी नहीं, दोस्ती नहीं थी. दोस्ती नहीं दोस्ती नहीं थी, दादी से दोस्ती थी. अच्छा, दादा से दोस्ती दादा नहीं से थी? दोस्ती नहीं थी. दादा को मैं, ही वॉज द मैन आई लुक्ड अप टू. रूल्स के पक्के थे. उनका एक बहुत बड़ा ऑफिस था ऊपर, और उसमें एक बहुत बड़ी टेबल थी, और उस टेबल पे वर्ल्ड मैप था. वर्ल्ड मैप चिपका हुआ था, उसके ऊपर एक शीशे की टेबल थी, और मैं हर रोज़ जाती थी, और वो हर रोज़ अम्मा को कॉल करके कहते थे, बुला लो इसको नीचे, मैं बता रही हूँ अभी वापस मुझे यहाँ आ गई तंग करने. एंड यू नो व्हाट आई वुड डू, मैं सिर्फ ये करती थी, दादा have you been here? Every day. Every day I would point to a new city, new something, and then there, and is it cold there? Is it hot there? And I was such a curious little person. I used to go through his drawers and he used to get upset. He used to say, ये मेरी फाइलों के साथ बैठ जाती है. And अम्मा, क्योंकि अम्मा टीचर थी ना, तो आई यूज्ड टू लाइक अंडरलाइन, या वो कहती ये बहुत पुरानी यू नो मेरी चीज़ें हैं, रिपोर्ट्स हैं, फाइलें हैं, ये क्यों यहाँ आती है. बस दैट्स व्हाट आई डू. देन ही वुड पुट मी ऑन द अदर टेबल, से वहाँ जाके ड्रॉ करो और यहाँ मत आना. लाइक ओके, तो मैं वहाँ जाके ट्रेसिंग पेपर के साथ ड्रॉ करती थी. Do you paint? Oh, I used to draw at some point. I don't paint anymore. I don't do anything anymore. Did you know कि इसमें ये सारी आएंगी उलझने, और you will be asked so much of yourself, emotionally and you know and time wise. I had no clue. I had no clue that there's so much that goes into acting. I thought मैं तो खड़ी हो जाऊंगी, लाइनें पढ़ूंगी and it'll be amazing. So कहाँ से मिला ये sensitivity के आप ये रोल कर सकते हैं? Mentors कौन थे? इसने आगे हाथ पकड़ के ले गए? I think well starting from Shoaib Mansoor, Yeah. क्योंकि उन्होंने मुझे सबसे पहले कास्ट किया बोल में. Did you know कि ये है, मैं सही जगह पे आई हूँ, वाकई मेरा यही. मुझे मजा बहुत आ रहा था. हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था मैं स्क्रीन पे कैसी हूँ. अच्छा. You know, मुझे मजा आ रहा था, लेकिन I enjoyed myself. Okay. Then मैं मेरीन के सेट पे जब गई तो फिर मुझे डर लगने लगा, because वहाँ मुझे लगा ये तो बड़ा हैवी एक, you know, because एक रोल था whatever. And मेरीन kept telling me कि देखो तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, तुम फोकस नहीं करते, you're distracted. उस वक्त I was like, हाँ, क्यों है? Do you have any idea ये क्यों है? I don't know. I am distracted. Because एक शरारती बच्चा है ना अंदर. Yeah. वो कॉन्स्टेंटली वो उसी तरह है जैसे कि दादा से पूछ रहा है कि आप यहाँ गए हैं, आप यहाँ गए. तो वो कॉन्स्टेंटली दरख्त पे चढ़ना चाह रहा है, फिर बेबी लड़कों के साथ भी खेलना चाह रहा है, और एक्ट्रेस भी बनना चाह रहा है, और सडनली रियलाइज किया कि फिर बहुत भारी भारी झुमके भी पहनने पड़े. क्योंकि व्हाई यू आर डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज you want to go hopscotch. Exactly. है ना, you want to go and maybe twirl and you know, ये कह रही हैं बैठे और अब लाइनें याद करें और अब आपने रोना है. That's so true. That's so true. So from there, you know, I didn't understand that then. फिर मैं आई सरमद के पास, you know, उसमें मैटर बहुत था हम सफर में. So उसमें फिर मैंने और उसमें ठहराव था, उसमें मैटर था. उसमें फिर मैं my personal life was also going through its own little, you know. So I think Humsafar is very personal. I gave it a lot of myself, you know. I gave it a lot of myself. And then by the time I came to Shehrazad, I think I was ready to be molded. Like I was like, अच्छा अब मुझे करना है. So इन सारे लोगों में, all the people that you played, where is your baby? Is your baby मिलता है वो कैरेक्टर जब घर आता है? Does he know कि ये शहरजाद आई है घर? As in Azlan? हाँ. Are you talking about Azlan? Yes, Azlan, your baby. Does he know कि जब तुम घर आती हो तो does he know? Because my kids knew कि ये अम्मी ये कैरेक्टर लेकर घर आ गई. तो लेके जाती हो घर या नहीं छोड़ जाती हो सेट पर? I must bring it home. I'm sure I do. But I try to cut off.
क्या करती हो सबसे पहले घर जाकर? ओफो, सबसे पहले तो मैं एक जगह ये थी जो भी I come in and I'm just like, and you arrive. I have arrived. Everyone knows I have arrived because of dadam didim dayam khana amma abba, you know, all of that. And the baby takes away. Yeah, it's like है ना? Aslan. And that is strange. If you think about it, it is so strange. Basically, it's because you are the creator of this character. Wow. And you love it. And he so just much. fills He's you just, in. It's your creation, right? That's why they say na ki gives birth, creates. And then here this person is who you've created, and you know, you're just like, this is mine. And the joy is just, it's really unmatchable. As is the pain that might come with it. I remember Anna, my older one, she also came after 12 years of our marriage. And मुझे याद है मैं रोज काम पे जाती थी and मेरा सारा करियर ही उसके दौरान ही हुआ शुरू. तो she used to say कि मामा नहीं जाए. तो ऐसे बेटा मुझे जाना तो है. तो she would cry. I said मत रो ना. तो कहती थी क्या करूँ मामा, आंसू रुकते नहीं है. And my God, my heart would just melt away. I know how that feels. It's like. So दिन में कितने फोन होते हैं अज़लान को? नहीं, दिन में कैसे फोन हो सकते हैं जब अम्मा मुझे दिन में 1000 फोन करती हैं. It's like I'm like really, it's like you know, I'm going to have a reaction to Amma, right? So I'm not going to call Aslan so much, but Amma is just like, literally, Jia, I have been in meetings where Amma's like, I'm like, hello Amma, I'm in a meeting. She's like, हाँ, but मुझे सिर्फ ये बताना है कि आज नसरीन, I was like, Amma, you have to understand. It's like, so cute. She doesn't understand. This is so lovely. Do you know how special that is? Oh, it's so special. Amma has started doing such random things, Jia. Like she randomly, जो है, पता नहीं कोई शो आ रहा था और national anthem बजा. अच्छा, अब without fail जब national anthem बजता है, let me tell everybody, उनके दोनों घुटने खराब हैं. वो चल भी मुश्किल से arthritis है. तो you know, बहुत तकलीफ से उठती हैं. नेशनल एंथम चल रहा था. I was in my room and I could hear who is this? But how wonderful. हाँ, वो खड़ी हो गई थी टीवी के सामने. She was, yeah. This is so special. ये बहुत प्यारी चीज है. अगर ये ये हम सब में हो जाए जो तुम्हारी अम्मा में है, you know तो कैसा अच्छा मुल्क बन जाए. That's true. But वो और वो क्या नहीं करती. She is like a cricket fan. वहाँ बैठ जाती हैं अपने मुसल्ले पे. I was like, Amma, please stop it. And I have videos of her which are priceless. What about your dad? अब्बा जो है ना वो मलंग इंसान. हमको कैसा फील होता है when he sees you on this big huge screen? अब्बा अब्बा को इन सारी चीज़ों से कोई फिक्र न फाकर. अब्बा को ये है कि तुम ठीक हो. हर रोज, हर रोज अम्मा नहीं पूछेंगी. अम्मा will call me for all of this. But Abba, हर रोज, how is my daughter doing? I hope her spirits are up. Oh, how nice. Yeah. Every day, without fail, Abba. It keeps you going. Abba, यही तो है जो आपको लेके चलता है आगे. और अब्बा बहुत कुछ और. वरना तक. वरना में कैसे आया? बेबी हमारा बेबी आ गया वरना में क्योंकि शुएब साहब ने मुझे एक ईमेल लिखी. उसमें उन्होंने कहा कि he basically said that how would you like a role that is of a lifetime. So I was like, ooh, that's a good pitch. बीच में कुछ और भी हुआ ना? जी. शाहरुख खान भी तो हुआ. शाहरुख खान भी हुआ है ना? We are very proud of you. Extremely proud. Thank you. ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जगह ले, कहीं पर आप काम करें, अपनी मर्जी से करें, अपनी टर्म्स पे करें, है ना? ये बहुत ज़रूरी है हमारी लड़कियों के लिए. जी. दोनों लड़के और लड़कियों के लिए आई थिंक बहुत ज़रूरी है. और मुश्किल भी होता है to do certain things that or not do certain things that you don't want. So yeah. अच्छा, are you doing Maula Jat? Yes. I want to know. That would be fantastic experience. मैंने आई थिंक 5 बार बिली को कहा था मुझे नहीं करना, किसी और को ले लो, प्लीज ले लो. और इसीलिए कहा था क्योंकि आई वाज लाइक कि पंजाबी मैं कैसे बोलूँगी.
I mean, also my structure, you know, I was just like, मैं कैसे? Because we tried कि मैंने पता नहीं, I've been trying to eat paratha. It has nothing to do with your structure. Really? It's from within. It is from within. You can be these, 6 feet tall and you can be as heavy you want to be. Because actor के पास यही तो है गुर. ये तो है. ये गुर है. ये तो एक है ना चाबी actors के पास. Allah Mia and your own hard work and God, you know, and so many other factors have contributed to your success. Whatever little there is, but there is. If you do not take a risk at this point, when? Yes. When else? Yeah. You know, fine, you might fail, but then let it be that, you know. So Varna, the comedy film, and Maula Jatt, wow, are all. It's all me saying, bring it on. Failure से डर लगता है? जी डर. What is failure? Kills me. I have stayed up nights thinking about this. In fact, I was talking to another actor friend and he said, then you're not made for this business. And I was like, why? Like, because क्योंकि इसका हिस्सा है. इसका हिस्सा है. Yes. और वही बिल्कुल और उन्हीं pieces को जमा करके फिर खड़ा होना पड़ता. और success क्या है? When I look at, I remember Bin Roy, you know. I remember watching a scene and thinking, I've done okay. And that was enough for me. Obviously, सोने पे सुहागा वो होता है जब आपको एक unanimous प्यार मिलता है और unanimous adulation मिलती है. उससे बेहतर तो कोई चीज़ नहीं होती आर्टिस्ट के लिए. और criticism? Criticism I've dealt with from my first drama. It's like, it's part of, I think it's part of our profession and it's definitely been a part of my journey. So what does it do for you? Bring you down या push करता है to do better? It also brings me down, but it definitely pushes me to do better. And controversies? Controversies are, I mean, this is my first bout with controversy, actually. So I never knew that, you know, ये भी होगा. ये भी हो सकता है. इससे पहले, of course, there was all like other stuff, like film related, not me personally related, you know. Do you feel कि हम जो actors हैं दुनिया भर के वो public property हैं? Yes, to a certain degree. You have realized that? Yeah. It makes you understand that you're vulnerable. And that your vulnerability is someone's money for the day. And as someone told me that the price of wisdom is innocence. Oh, that's sweetly said. Nicely put. put. Yeah. So I've definitely become wiser. Unfortunately, maybe a little less innocent. और जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या चीज़ है जिंदगी वैसे? आप सोचें तो कितनी खूबसूरत चीज़ है एक्चुअली. सिर्फ अगर आप 2 मिनट के लिए, जो कि मैं कभी-कभी मेरा पूरा दिन गुजर जाता है और मैं ये नहीं करती, but if you focus or if you try to just for this moment say, okay, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ with one of my favorite people that I've known for so many years. और हम ये बातें कर रहे हैं और अगर ये लोग सोचें that we have a small privilege of hearing this personal conversation in this moment, it's perfect. It's so perfect. मेरा को क्या अच्छा लगता है? कौन सा रंग? कौन सा मौसम? But also, can I just say, I romanticize everything. बारिश. Isn't that? Do you have this problem? Yes. I know you do. I've seen you. I romanticize every moment, and that's why I think I'll never really Do you write? fall in love. I write, of course I write. You write poetry? Oh no, I'm not that great of a writer. I like poetry, but I'm not. I just write. I write a lot, but I romanticize. I'll romanticize anything. So what touches you? Everything. You don't understand. I can romanticize the door opening and closing. Yeah, because there is something very. I think mysterious about closing and opening. There you go. Yeah. There you go. You know, because you don't know वहाँ क्या है. वहाँ क्या है उसके पीछे कौन आप सोच सकते हो. Yes, so पूरा beautiful. दिन. Yeah, I can do that all the time. I'll romanticize it.
a bag, like I lose bags on the airport, I'll romanticize it. The bags got lost. Now what? Like, it's so weird. I think I'm gonna go crazy. Are you in love? No, actually. No? No. I have been, I was. Now I realize that love is when you're with somebody and it's okay, you don't have to talk because their presence is. क्या अच्छा लगता है? बारिश और तितलियाँ और तितलियाँ नहीं, पर मुझे नहीं समझ में आती, अच्छी लगती हैं, लेकिन I'm not that girl. अच्छा. No. I would run after a rabbit, but not run after a titli. Okay, I was more of a so rather than, you know what I mean? Yeah. I was that child. You know, मैं अपने पुराने गाने लगाती हूँ, रफ़ी के गाने, इतनी चाय, and that is my peaceful time. Are you getting ready for your own home? I want my own home. For my parents and for all of us, and I want it to be mine, and I want to set it up. कैसा बनाऊंगी? This reminds me of my dadi. You know, my dadi used to, right before she passed away, window खोल के अपनी वो गाती थी, एक बंगला बने न्यारा. हाँ, ये बहुत बड़ा ही प्यारा गाना. सोने का बंगला, चांदी का जंगला, उसमें रहे मेरा कुंबासार. बिल्कुल अलग नहीं होना, सब लोग इकट्ठे हो अभी भी. मैं अम्मा और अब्बा के बगैर क्या करूंगी? मैं उनके बगैर नहीं. तो फिर उनके घर के ऊपर घर बना लो. 5 साल हो गए. I'm like, अब्बा ऊपर बनवा लें, because my father is an engineer. Okay? नहीं, हमारे घर का जो जमीन है वो हिली हुई है. भाई आपको कैसे बता? 3 इंजीनियर आ गए, तीनों ने बोला आप बना सकते हो, पर वो बन के नहीं देता. So I've actually decided कि inshallah one day I'll have enough money soon inshallah to buy a house where I can have everybody, and then Amma and Abba can just have their own, you know, all of that. So you'll have your unit and their unit. Yes. और कलर्स कौन से अच्छे लगते हैं? सफेद. बिल्कुल सफेद. बिल्कुल. अगर पेंट करती होती तो कौन सा कलर उठाती? लाल. सफेद पे लाल या लाल पे सफेद? सफेद पे लाल. और क्या बनाती? I think maybe I'd make an eye. It's the easiest. I think my first thing would be to make an eye. Or I'd make Spider-Man. So आँख और Spider-Man का क्या ताल्लुक? मुझे नहीं पता. जब मैंने अपने बारे में सोचा तो मैंने आँख सोची. तो आँख से क्या? जब मैंने अज़ू के बारे में सोचा कि I'm using red. तो Spider-Man. Because मैंने he's aged now. मैंने इन 8 सालों में जितनी पेंटिंग की है वो सिर्फ स्पाइडरमैन की है. स्पाइडरमैन भाई हमारे साथ, हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में रहते हैं. एक्चुअली एक स्पाइडरमैन इतने बड़े थे, वो बहुत अरसे तक हमारे साथ सोते थे. एंड एवरी टाइम अजलान सोता था, मैं उसको जो था मैं स्पाइडरमैन को कहीं, बट आई यूज्ड टू बी लाइक या ऑफ कोर्स स्पाइडी विल स्पीक. तो वो जब बड़ा हो जाएगा फिर क्या करेगी माहिरा? That's what Amma keeps saying. What you gonna do when he बाहर पढ़ने चला जाएगा, फिर से कोई अच्छा लग जाएगा? I think I'll take a long holiday when he does that, and then I'll make films. I want to direct. I always want to be in this business. I want to direct. Yeah. Maira will not get married and fall in love? I don't know. I might fall in love. I hope I fall in love. I think love is a very, very good thing. And I've experienced it, you know, where you felt that it just is so good, you know. Do you understand separation? लोगों से अलग हो जाना. Do you understand that? Yeah, I do. Do you understand death? Yes, but I mean, yes, I do understand that, but I don't know what would happen if it would be too close to home. It's been, yeah. Thank you. Thank you. And I love you. I love you too.
Assalamu alaikum everyone, this is Mahira Khan. If you like this video, please share and comment. And of course, subscribe to Rewind with Samina Pirzada.